Gujarat. I am from Gujarat and I did my MBBS and PG in Ahmedabad, sir. And I passed my MS in 2019, and then I did 1 year, sir, and then I left the job after 2020 NEET assessment, and then I did my preparation for 1 year, quit my job and purely read for entire 1 year. सो बिकॉज जो एग्ज़ाम का जो डिले हुआ है उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम चला था, बट आई cracked aims in April sessions and also cracked INICET in December. So थोड़ा लंबा जर्नी रहा है, पर अल्टीमेटली आपने बहुत फेल्यूर्स भी देखे हैं और अल्टीमेटली टॉप पे पहुंचे हैं. इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज नाउ पीपल आर थिंकिंग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. कल हम लोग क्लास ले रहे थे, एक फैकल्टी हैं डॉक्टर गोविंद जिन्होंने गेस्टो पढ़ाया, उन्होंने 12th अटेम्प्ट में सर्जिकल गेस्टो क्लियर किया. Oh my God. So he took 3 attempts for this AIMS, 3 for JIPMER count, 2 to 3 years he took almost. So it's important कि आप फेल्यूर से भी सीखते हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो जाते हैं तो आगे बढ़ना छोड़ दो या आगे अपने प्रयास करना छोड़ दो. इम्पोर्टेंट होता है कि आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है कि आप खुद कर पाए. और आप एमएस में भी फेल हो गए थे. हाँ, मैं एमएस में भी फेल हो गया था. तो फेलियर तो मेरे साथ बहुत पुराना नाता है फेलियर से. तो ये बड़ी बात होती है कि मतलब आज के टाइम में एमएस ऐसा होता है कि पास हो जाते हैं, वहां पे फेल हुए और फिर इतना बड़ा ऊपर गए हो कि आज फेल करने वाला भी सोच रहा हो. सही है, सही है सर. हमारे कॉलेज में तो ऐसा ट्रेंड था कि मतलब जो लोग फेल हुए वो सब ने टॉप किया था. न्यूरो सर्जरी में मेरा एक सीनियर था भानु प्रताप सिंह, वो भी फेल हुए थे, उसने भी टॉप किया था. तो एक ट्रेंड सा हो गया थी कि फेल लोगों ने ही टॉप किया था सबने. तो आप लोग फेल होना चाहेंगे एमएस में कि मैं फेल हो जाऊं इससे? नहीं, फेल होना चाहिए ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना. ऐसा आगे मतलब ऐसा टेंशन नहीं है कोई कहने कि का क्या. मतलब ये कि लाइफ खत्म नहीं होती है, एक हाँ, फेल्योर से लाइफ खत्म नहीं होती है. हाँ, नहीं होती, नहीं होती. हाँ, सही सही. और मेरे वो काफी मतलब स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट है अभी पूछ रहे हैं कि थोड़ा बॉर्डर लाइन मार्क्स है, 300 मार्क्स है, 300 रैंक है, तो क्या करूँ, ले लूँ नहीं ले लूँ, मतलब थोड़ा पेरी पेरी में कॉम्प्रोमाइज करके ले लूँ. तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप का ड्रीम है यूरोलॉजी अच्छी इंस्टीट्यूट में से करना है आपको, ठीक है ना, तो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. मतलब ब्रांच मतलब आपको मतलब आपके करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. और 6 मंथ इज इनफ फॉर प्रिपरेशन आई थिंक. और अगर आप ट्रूली और हार्डली मेहनत करते हैं, डेडिकेटेडली करते हैं मेहनत, तो हो जाता है. उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ब्रांच में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आई थिंक इंस्टीट्यूट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. तो मैं इस सब एडवाइस देता हूँ ब्रांच और कि इंस्टीट्यूट जिंदगी भर आपके साथ चलते हैं. आप हाँ आज चल. कॉम्प्रोमाइज करोगे तो लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज होता है. हाँ, मैं यहाँ पे छोटा सा ऐड करना चाहूंगा कि आपको ये देखना है कि ये वाला जो रैंक है आपको तुक्के से आ गया या आप उसी रैंक के लिए हो. अपने मन से पूछो. आपको लगता है कि ये आपका बेस्ट है तो उठा लो, आपको लगता है आपका बेस्ट नहीं है तो फिर आप तैयारी करो. तो पीपल हैव टू डिसाइड बाय देमसेल्फ ओन बाय दे हैव टू लिसन देयर हार्ट कि दिस यस. इज देयर बेस्ट, देन दे शुड टेक. इफ इट इज नॉट बेस्ट देन दे शुड ट्राई फॉर बेस्ट. तो इसमें ऐसा है कि अगर आपको टॉप करना है तो मतलब लोगों से और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्री में नहीं आता है टॉप का रैंक. तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए. तो मतलब आप टॉप में आना चाहते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत लाइफ में थोड़ा फैमिली के बारे में वो सब बारे में थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको. डेडिकेटेडली 6 मंथ आपको जॉब को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी. तभी आपको टॉप इंस्टीट्यूट है. तो थोड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा और डेडिकेटेडली मेहनत करनी पड़ेगी. तभी आप दूसरों से आगे निकल सकते हो. मतलब दूसरों से ज़्यादा आपको थोड़ा ज़्यादा अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप टॉप कर पाओगे. तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है. तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि विदाउट जॉब यू कैन डू, और जॉब के साथ भी अगर आप कर सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड. बट अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हो तो अभी 6 मंथ का टाइम है और विदाउट जॉब आप कर सकते हो. और
अगर प्योर हार्टली आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता ही है। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स डे में पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका कितना भी बिजी शेड्यूल शेड्यूल क्यों ना हो। आपको 7 आवर्स निकालने ही है डे में से। 7 आवर्स इज मोर देन इनफ फॉर स्टडी आई थिंक। तो 7 आवर्स इज इम्पोर्टेंट। आपको रोज डेली पढ़ना है। 1-2 दिन से ज़्यादा मिस नहीं करना है आपको। डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक जो मैं बताना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। और एमसीक्यू चाहे कितने भी प्लेटफॉर्म से क्यों ना हो, आपको सब प्लेटफॉर्म के एमसीक्यू का यूज़ करना है, आपको यूटिलाइज करना है। कि जितना ज़्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतना आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, दूसरों से कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और मॉक टेस्ट में अगर आपका 80% स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका नीट में भी 80% ही आएगा। तो मॉक टेस्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नीट। सो अगर मॉक टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कंसिस्टेंट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो अभी दो तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने अभी एग्जाम दिया और रैंक पीछे आया है, नहीं सिलेक्शन हुआ, और एक जो लोग हैं जो इस साल अपीयर होंगे, जो फ्रेशर्स हैं। दोनों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? हाँ, आई थिंक बेली तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि बेली में से क्वेश्चन आ सकते हैं। और सेबिस्टन जो भी 21st एडिशन आई आई है, जो नहीं आई, उसको भी थरोली रीड करना चाहिए। क्योंकि हम अभी ये प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट। बट जो थोड़ा बहुत आगे का जो जनरल है, जो जेनेटिक्स और मोलिकुलर है, और ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा दिया है डीप में, वो सब आप लीव कर सकते हैं। उसके क्वेश्चन करके उसको आप कर सकते हैं। लेकिन आपको स्पेशलिटी सब करनी पड़ेगी सेबिस्टन में से, क्योंकि हर स्पेशलिटी में से 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और पूरा बेली पे फोकस नहीं रह सकते, क्योंकि 150 क्वेश्चंस जो है वो पूरा बेली से नहीं मिलते। वो सेबिस्टन से आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो तो यही कि एक ही है कि जितना बन सके उतना ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व कीजिए, ताकि पता चले कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और कौन सा टॉपिक आपके लिए वीक है, कौन सा आपके लिए अच्छा है। तो वही है। और ट्राई कीजिए कि मॉक टेस्ट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस अपना दे सके, पिछले मॉक टेस्ट से ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस बेटर दे सके। क्योंकि एटलीस्ट नीट एसएस के एग्जाम के पहले आपको मॉक टेस्ट के अंदर कंसिस्टेंटली 2 to 3 मॉक टेस्ट के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देना जरूरी है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस आएगा नीट एसएस में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी लोग फ्रेशर्स निकल रहे हैं, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि अभी ऑलमोस्ट 4 महीने मिनिमम है, जून से Yes. पहले एग्जाम नहीं होने वाला है। तो हम्म, फर्स्ट 2 मंथ उनको थोड़ा थ्योरी पढ़ना चाहिए, किताबों के पन्ने पलटना चाहिए, और हम्म, फिर आखिरी के 2 से 3 महीने जितने ज्यादा एमसीक्यूज कर सकते हैं वो करो। ये हम्म, मेरा हमेशा का मानना है कि एमसीक्यूज ही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, बट आपका हम्म। बेस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपकी रैंक उस पर डिपेंड करती है। कि Yes, जब yes, भी definitely. एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस होता है, तो फिर आपको आपका थ्योरी और बेस काम आता है। एमसीक्यू आपको एक लेवल पे लेके चले जाएंगे जहां आप हम्म, सिलेक्शन हो जाएगा, बट जो अच्छा रैंकर है उसका बेस हम्म। होना भी जरूरी है। जरूरी है। और अभी जो नीट की जो क्वेश्चन पैटर्न है, वो भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव टाइप के पैटर्न है। एनालिटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं सब, और केस बेस्ड सिनारियो डाल रहे हैं। तो मेरा जो जनरल सर्जरी का पार्ट था, उसमें से 25 क्वेश्चन पीडियाट्रिक सर्जरी के थे। ऑल हम्म, क्वेश्चंस आर केस बेस्ड एंड फिगर बेस्ड, ऑल आर एनालिटिक क्वेश्चंस। सो वो भी उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। कि मोस्टली कोई क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। एनबी वाले कभी रिपीट नहीं करते क्वेश्चंस। तो वो सब चीज़ भी ध्यान रखना है आपको कि पुराने क्वेश्चंस जो pattern है उसके ऊपर नहीं जाना है, नए क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। और जो क्वेश्चंस केस बेस्ड है, सिनारियो बेस्ड है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो स्टार्ट करना है इनको, वो पहले पढ़ना चाहिए फर्स्ट पेज टू पेज, देन गो फॉर सेमेस्टर, देन कंबाइन बोथ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हो रही हैं, और देन गो फॉर एमसीक्यूज, क्योंकि और देन रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीक्यूज, वट एवर द प्लेटफॉर्म दे लाइक they can do. हम्म, And the same thing I told to my batch on last time also, last 10 days, to at least 1,000 MCQ per day from any यस, platform, डेफिनेटली, whatever different. You should be डेफिनेटली। doing in last 10 days 1,000 MCQ per day. You have to do. It's not like that you do 100 on 200. It doesn't matter. Last 1 month daily 500. Last 10 days 1,000. That is important. But before that you have to सब have base. आपका base नहीं होगा तो फिर MCQ उड़ जाते हैं, वो रहते भी नहीं है। यस, यस, डेफिनेटली।
तो वन मोर इम्पोर्टेंट मुझे पूछना है कि एग्जाम में कैसे फोकस रखना है अपने आप को, क्योंकि आपके साथ भी काफी और थे, आपके एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था, दिल्ली में आप रह रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ में, पर्सनली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था। उन सबको एक साइड करके आपने कैसे एग्जाम पे फोकस किया, कैसे आपने एग्जाम के दिन बेस्ट परफॉर्म किया? हाँ तो ऐसा है कि जो चीज़ मतलब अपने हाथ में होती है उस पर ही हम फोकस कर सकते हैं। एग्जाम की डेट एंड ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इन अवर हैंड। वो एनडी वालों के हाथ में है। तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस महीने में आ सकती है, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि मतलब कोविड का जो वेव आ रहा है तो उसके हिसाब से फ्लक्चुएट हो सकता है, 2-3 दिन, 2-3 महीने पीछे भी जा सकता है। तो अपने जो स्टूडेंट्स है वो उसको मेंटेन करके रखना है, अपनी जो जो हार्डवर्क जो कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका जो रिदम है उसको मेंटेन करके रखना है। अपने को ऐसा मान के चलना है कि जून महीने में होने ही वाली है एग्जाम, ऐसा मान के चलना है। अगर डिले हो रही है तो आपको 2-3 महीने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का मिल जाएगा। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। जो मतलब अपने हाथ में है उस पर ही फोकस करो, उसको ही स्ट्रेंथ बनाओ। जो जो फैक्टर्स जो अपने हाथ में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ही। और जो डिले होगा, जो होगा वो सबके साथ होगा, वो आपके अकेले के साथ नहीं होगा। तो वो फैक्टर कॉमन है, तो उससे आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ सबके साथ होगी। और ये जो एग्ज़ाम है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो तो सबका इवेल्यूशन होता है सेम। तो उससे आपको डरना नहीं है। और जो भी चाहे जैसे भी पेटेंट हो, अगर एग्ज़ाम के अंदर भी अगर टफ क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा मान के चलो कि सबके लिए टफ है वो क्वेश्चन। और हमारे जो अभी एग्जाम का पैटर्न जो हुआ था उसमें 10-11 क्वेश्चंस, जो मेरा 40 में से जो 12 क्वेश्चन है वो जनरल सर्जरी में गलत हुए, वो सबके गलत ही हुए। जनरल सर्जरी में ही डिफिकल्ट था तो सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन उसको आपको चालू एग्जाम में वो प्रेशराइज नहीं हो जाना है। एकदम दिमाग ठंडा रख के एग्जाम देनी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मैं मेरी पैटर्न से जो एग्जाम देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार मतलब जो क्वेश्चन टफ लग रहा है, जिसका समझ नहीं आ रहा है, उसको जाने देता हूँ, मैं पहले स्किप ही कर देता हूँ उसके। तो मैं पूरा 150, अभी तो 40 मतलब 100 क्वेश्चंस थे, लेकिन 150 क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस आपको पहले आ रहे हैं ना उसका फटाफट से आंसर कर दो और निकल जाओ। जिसमें थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है ना उसको स्किप करो, जल्दी से स्किप करो, आगे बढ़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है। पहले बार एक बार पूरा पेपर देख लो, आप 150 क्वेश्चंस देख लो और अंदाज लगा लो कि क्वेश्चन का लेवल, एग्जाम का लेवल कौन सा है, हाई है, मीडियम है, लो है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा इवेल्यूशन चालू करो क्वेश्चन 1 से। फिर जो आपने टिक कर लिया उसको दूसरी बार इवेल्युएट कर लो कि हाँ सही टिक किया है। कभी कभी दूसरी बार जो आप क्वेश्चन जो रीड करते हैं उसमें भी 2-3 सिली मिस्टेक निकल जाती है, जो आप मतलब इजिली आपने मिस किया हो, तो उसको करेक्ट करो। और उसके बाद जो क्वेश्चंस, तभी जब आप 150 क्वेश्चंस एक बार सोल्व कर लोगे तो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा है, पीछे के क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप अपने आप बढ़ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है तो आगे के जो टफ क्वेश्चन थे, जो पहली बार में आपको याद नहीं हो रहे थे, वो भी आपको इजीली याद आ जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को 2 बार रिवाइज करना पड़ता था पूरे क्वेश्चंस, जो जो आगे क्वेश्चंस जो अगर मुझे नहीं आते थे, तो दूसरी बार जब मैं रीड करता था तो मेरे को आंसर्स उसके पता चल जाते। तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। तो उसमें आपका टाइम का भी हो जाएगा। और इनिशियल आधा घंटा थोड़ा एंक्सियस रहता है, अपने एंक्सियस रहते हैं एग्जाम चालू होने के बाद। तो उसमें हम गलती कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन में भी गलती कर सकते हैं। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। पहली बार जब आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है लीव करो उसको, जो समझ नहीं आ रहा है उसको लीव करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पहली बार एक बार 150 क्वेश्चन देख लो एक बार। ठीक है। उसके बाद 1 घंटे के बाद दूसरा राउंड चालू करो, उसमें फिर सोचना चालू करो, उसमें फिर अप्लाई करना चालू करो, उसमें दिमाग लगाना चालू करो। ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी रहती है। एटलीस्ट आपको 2 बार तो देखना ही है, चाहे इजी क्वेश्चन क्यों ना आपने टिक किया, उसको आप दूसरी बार तो देखना ही है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे निकलते ही है कि जो आपने इजीली मिस किए हो, जो आपने ऐसा लग रहा हो शिट इसको तो नहीं देखा होगा तो मेरा गलत हो जाता है। तो वो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो एरर इससे बहुत कम होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे भी कोविड हो गया था सर। 10th को एग्जाम थी, 8th को कोविड हो गया था, फीवर आ रहा था, तो वैसा हालत था। तो वो सब चीज़ें तो अपने, लेकिन आपने अगर मेहनत किया है तो उसको तो आपको करना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है पूरा। वो चाहे कुछ भी हो जाए वो तो होना ही है आपका। अगर जब मेहनत किया है तो उसका तो आपको परिणाम मिलता ही है। तो वो टेंशन नहीं लेना है। जस्ट एग्जाम देना है, फ्रीली ओपन माइंडेडली देना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। और जब मेहनत किया है, मतलब मॉक टेस्ट में आपका स्कोर आ रहा है तो आने ही वाला है नीट एसएस में स्कोर। और जो बंदे का जिसका आता है मॉक में स्कोर, उसका ही नीट में स्कोर आता है। वो तो जिसका एम्स का जो मॉक टेस्ट जो लेते थे ठीक है, प्लेटफॉर्म हाँ। में, जो बंदे स्कोर करते थे वही एम्स में क्रैक करते थे। तो कोई जादू नहीं होने वाला है नीट में जो स्कोर मॉक टेस्ट में आएगा। इसलिए बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट ज्यादा दीजिए, ज्यादा लोग दे दीजिए, ताकि पता चले कि
आपका लेवल कहाँ पे है, दूसरों के हिसाब से आप क्या लेवल कहाँ पे है, वो सब पता चलेगा। तो ये चीज जो है वो सब इम्पोर्टेंट है। और basically basically practice is important, so यस, you have to प्रैक्टिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। practice. And one more thing, my Kulkarni sir is my mentor and guru. He always said perfect practice makes perfect. It's not like if you're doing the wrong practice again and again, you will not make perfect. So you have to do practice also perfectly. So that's the important thing कि you mock test is a kind of a main exam. तो आपको mock test में भी वैसे ही सोचना है कि आपको main exam देनी है। यस सर, यस सर। आप और ये एक सोच दूसरी के नहीं दे सकते कि मॉक टेस्ट है, इसको कुछ भी करने आ रहे हैं, जा रहे हैं करने, वो चीजें नहीं होती है। मॉक टेस्ट है कोई भी टेस्ट। यस सर, डेफिनेटली। और एक दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई टेबल है, कोई क्लासिफिकेशन है, वो चीज मतलब समझ नहीं आ रही है, दिमाग में नहीं उतर रही है, तो उसको उसी टाइम पे उसको याद करने की टेक्निक ढूंढ लो, क्योंकि वो चीज बार बार आप भूलोगे। और वो चीज में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लॉस करोगे, चाहे कितनी भी बार रिवाइज किया हो। तो वो जो चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल आपको चाइल्ड फॉर क्लासिफिकेशन में समझ नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन करना समझ नहीं आ रहा है, आपको ग्लासगो कोमा स्केल का समझ नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है, तो वो चीज को याद करने का तरीका उसी टाइम पे बना लो, जब रीडिंग कर रहे हो ना, उसको टैग कर दो, उसका कोई मेमनोमिक्स बना लो, या कुछ उसका फनी वे से याद करने का तरीका बना लो, ताकि आपको पूरा याद नहीं रखना है। आपको अगर एमसीक्यू अगर आएगा तो आपको कैसे सोल्व कर पाओगे, बस उस इतना ही याद रखना है। तो अगर कुछ क्लासिफिकेशन है तो उसका मतलब टीएनएम क्लासिफिकेशन है तो T2 T3 याद रख लो, T1 सबको याद रह जाता है, T4 याद रह जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा प्लानिंग में से याद करो सब। और जो चीज़ डिफिकल्ट है याद रखने के लिए, जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं ना, उसको उसी टाइम से याद करने की टेक्निक बना लो, क्योंकि वो बार बार चीज़ वो मिस होती है। क्योंकि जो एमसीक्यू गलत होता है, जिस वो अगर दूसरी बार आएगा तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता था कि मैं बार बार वही चीज़ को गलत करता था। तो इसीलिए जो चीज़ डिफिकल्ट है, जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे याद नहीं रहेगी, वो लो और उसको याद करने का तरीका ढूंढ लो, उसको कैसे याद करनी है, उसको कुछ जगह से टेक कर लो यार, उसको फनी वे में याद करो, आपका जो तरीका आपको शूट लगे, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम आजकल ऐसे ही आता है, टेबल में भी आपको ऑड देखना होता है कि क्या ऑड है या क्या मोस्ट कॉमन है। और फिगर यस, में ये देखना होता है कि क्या स्पेसिफिक साइन है। यस, क्वेश्चन यस, फिक्स होते हैं, इतना यस, एग्जाम्पल लोग दे चुके होते हैं, वो पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। यस, तो यस, ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप देखते हो, सोचते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी अपना पढ़ रहे हो तो इस तरह से पढ़ो कि आप एग्जामिनर हो। आप यस, स्टूडेंट कैसे पढ़ोगे तो आपको लेवल नहीं जाएगा। आप एग्जामिनर हो, आप इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनाओगे, आप इस यस, पेज से क्या क्वेश्चन बनाओगे। आप उतना पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि इस पेज से 4 क्वेश्चन तक नहीं बनने वाले, उन 4 क्वेश्चन को मार्क कर लो। नेक्स्ट आपको चैप्टर और पेज खत्म हो गया, आपको अगली बार सिर्फ वो 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं उसमें से। तो आपको खुद के एग्जाम एग्जामिनर खुद ही बनना होता है। और एक दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, ठीक है ना। आप उसको एग्जामिनर के दिमाग से क्वेश्चन को नहीं देखना है, ठीक है। आप उसको उसके ऊपर नहीं जा सकते। आपको जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें सिंपल कौन सा हिंट दिया हुआ है, उसके हिसाब से सिंपल सा आंसर करना है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तुम ज्यादा दिमाग लगाओगे, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, क्या घुमा के पूछना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो आंसर गलत हो जाता है। और उसका आप बाहर निकल के देखोगे तो उसका सिंपल सा आंसर होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जामिनर या इस तरह से घुमा लिया है क्वेश्चन, इस तरह से घुमा लिया है, हाँ ये इसने, ऐसा नहीं सोचना है। सिंपल सा जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है, पीछे देखना है, एक्सेप्ट है, नो है, ऑल आर ट्रू, एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट को 2-3 बार दिमाग में बोल लो, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है। कि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, पीछे पढ़ते नहीं है, एक्सेप्ट है, और सिली क्वेश्चन मिस कर देते हैं। तो जो नहीं दिया है वो एक बार मन में 2-3 बार, जब आप ऑप्शन भी पढ़ते हो तो ऐसे वैसे बोला करो मन में कि हाँ एक्सेप्ट था, ये आंसर में एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। और इस तरह से रूल आउट करो, ताकि वो अगर सिली मिस्टेक आपकी ना हो, कि जो जो एग्जाम जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसको मैनिपुलेट करके जो बनाते हैं एग्जामिनर, तो वो सिर्फ सिली मिस्टेक, उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज मेरे को विदा ड्यूरिंग द एग्जाम इंपॉर्टेंट लगी, कि ये चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इससे आपकी सिली मिस्टेक बहुत कम होगी। जनरल सर्जरी का पार्ट इस बार सबका टफ आया था, तो सबका ये टफ था। एक्सेप्शन छोड़ दो। तो वैसे हम्म। जनरल सर्जरी को किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो पैटर्न आने वाला है वो नीट एसएस पे आने वाला है, तो यस, वो किस तरह से कवर करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बैलिंग सेमेस्टर में जिन पे मोर फोकस होना चाहिए। और कुछ टॉपिक जैसे आपने बोला कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो चीजें छोड़ सकते हैं, बाकी हम्म, और क्या इंपॉर्टेंट है कैसे। हाँ, लोगों का क्वेश्चन ये मुझे आता है कि सर नाउ स्टार्ट कैसे करें,
क्योंकि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी कैसे स्टार्ट पढ़े, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़े? तो जनरल से मतलब सर्जरी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो सब्जेक्ट जो फीडर सब्जेक्ट है वो उसमें, और एक जनरल सर्जरी का जो पार्ट है उसमें। तो जनरल सर्जरी का जो पार्ट है वो सेबिस्टर ने बहुत डेप्थ में दिया है। वो सब मोलेकुलर, वो सब इन्फेक्शंस और वो सब चीज़ें, वो इंटरल्यूकिन, वो सब ज़्यादा डीप में दिया है। वो अपने समझ में भी नहीं आता है, और बहुत सा डीप में दे दिया है। तो उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और जो फीडर फीडर ब्रांचेस है ना, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। उसमें से जो आ सकते हैं, वो न्यूरो सर्जरी का शायद 20-30 पेज का चैप्टर है, प्लास्टिक सर्जरी का भी 30-40 पेज का चैप्टर है। तो उसमें से श्योर शॉर्ट है कि 10 to 15 क्वेश्चन आने ही वाले। तो उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो आपको स्ट्रेंथ बनाना है, ठीक है। जनरल सर्जरी का जो है वो बहुत वास्ट है, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन वो लोग फ्रेम कर सकते हैं। तो उसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको हमको स्ट्रेंथ बनाना है। तो वो स्पेशलिटी में से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जो 12 की 12 स्पेशलिटी जो उन लोगों ने फॉर्म्स में दिया है ना, पीडियाट्रिक, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, वो सब में से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो सबका जो डिफिकल्ट है, पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी बहुत डिफिकल्ट है, वो समझ में नहीं आता है वो सेबिस्टन में, और हमारा एक्सपोजर भी नहीं रहता है। तो उसमें से सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना है कि क्या क्या, मतलब सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हो, और उसमें डेप्थ में भी नहीं जाएंगे वो, लेकिन उसको आपको आना चाहिए। सिंपल सा वो, और टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट का कौन सा साइन मिलता है एक्सरे में, वो सब ऐसा ऐसा करके पूछ सकते हैं। क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, माइटल रिगर्जिटेशन का कौन सा क्लासिफिकेशन यूज करते हो, वो पूछ सकते हैं। उसमें से डीप नहीं जाते। लेकिन जो हार्डकोर जीआईटी है, यूरोलॉजी है, उसमें वो लोग डेप्थ में जा सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा डेप्थ में से सेबिस्टम में से पढ़ना है। और मैं अब तो यही एडवाइस दूंगा कि बेली तो आपको पढ़ना ही है, चाहे क्वेश्चन आए ना आए, क्योंकि पता नहीं कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगर बेली में से आ गए क्वेश्चन, और अगर आपने बेली रिवाइज नहीं किया है, तो आपका मेजर लॉस हो सकता है। और बेली ऐसी चीज है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बेली आप जब पीजी में पढ़ते हो वो डिफरेंट होती है, और एमसीक्यू के हिसाब से डिफरेंट होती है। और स्टिल बहुत बार मैंने भी बेली 10-12 बार रिवाइज किया, फिर भी मेरा बेली में से मिस होते थे क्वेश्चंस। तो वो इम्पोर्टेंट है। और जब भी मतलब वो होगा कि आंसर का जो डिफरेंस आएगा बेली या सेबिस्टन के, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बेली का रेफरेंस वो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो बेली तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट ही है, बेली को आप छोड़ नहीं सकते। 1-2 लाइन फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, बेली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इन द बेली इज इम्पोर्टेंट। और सेबिस्टन में से आप जा सकते हो, आगे का चैप्टर सब छोड़ सकते हो। अगर उसमें ज़्यादा बहुत डीप है तो छोड़ सकते हो, ऐसा लगता है कि बहुत थियोरेटिकल पार्ट है तो उसको छोड़ सकते हो। लेकिन सेबिस्टन की जो फीडर सब्जेक्ट है उसको तो आपको पूरा करना ही है, उसमें से तो क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली तो वो सब सब इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी को आपको लेके चलना है कि है, अभी कॉमन एग्जाम है तो भी सारी स्पेशलिटी एक साथ आ गई है, तो आपको सब कुछ पढ़ के ही जाना है। पढ़ के आप ही ये नहीं जाना है। सोच सकते कि इवन मेरी जो एग्जाम था, जो मैंने नीट एसएस का कॉमन पैटर्न दिया था 2017 में, वहां हाँ भी मैं कार्डियक थोरेसिक जो ये वाला पार्ट होता है वो मैं हाँ छोड़ के गया था, और उसमें से हाँ करीब करीब 8 या 9 क्वेश्चन थे, मेरे 4 या 5 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो हाँ हाँ जो मेरा मेजर डिसाइडिंग फैक्टर था रैंक में, वो बहुत गलत वो था। अदरवाइज मेरा पेपर बहुत अच्छा था, आई गॉट 93%। ओ टॉपर और मेरे बीच में सिर्फ 8 क्वेश्चन का डिफरेंस था, और ओके। 4 क्वेश्चन तो मेरे कार्डियोथोरेसिक के गलत थे, वो सिंपल सिंपल साइंस थे। हाँ वही वही सिंपल सिंपल जो हो गए वो मिस हो जाएंगे, और आपका रैंक बहुत पीछे चला जाएगा। बिल्कुल। और अभी क्या है कि थोड़ा कंपटीशन भी थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि सब कंबाइन हो जाएंगे। तो अभी आपको एक क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरे मेरे हिसाब से ऐसा है, क्योंकि एक बिल्कुल। क्वेश्चन भी बहुत मैटर करेगा। 200-300 मार्क रैंक का डिफरेंस कर सकता है एक क्वेश्चन। तो मेरे आप मैं सेम बताता हूँ ना, मेरा मेरा फ्रेंड था, दोनों में 1 क्वेश्चन का डिफरेंस था। एक हम्म सिंगल 1 मार्क का डिफरेंस था पॉइंट्स में बोला जाए तो। ये हम्म दोनों के मेरे 140 कुछ सही थे, उसके 141 सही थे, और हम हम्म दोनों के रैंक में 56 रैंक का फर्क था। ओ और मतलब हाँ जितना आप पीछे जाते हो ऊपर जाते हो ये डिफरेंस बढ़ता जाता है। डेफिनेटली। और आठ और 8 क्वेश्चन में टॉपर से मैं 193 परसेंटाइल पे आ गया। 90 100 हम्म परसेंटाइल से, या 99 परसेंटाइल से मैं 93 पे, 6 हम्म हम्म परसेंटाइल के फर्क है। तो सिली मिस्टेक्स और सब स्पेशलिटी को आप अफोर्ड, मतलब आपको करना ही पड़ेगा बेस्ट अपना। हम्म। और इसमें भी इस रिजल्ट का भी आप एनालिसिस करो ना सर, तो अभी 300 के ऊपर बहुत कम लोग हैं। लेकिन हम्म 280 से 290 95 के बीच में पूरा क्लस्टर है रैंक का। तो अगर, देखा मैंने। हाँ, तो ये क्लस्टर अब बहुत बड़ा हो जाने वाला है। ये बड़ा तो हो अगर, जाने वाला है। हाँ, तो आपको मगर टॉप अच्छी इंस्टीट्यूट चाहिए, और चाहिए तो आपको ये क्लस्टर से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी आपको अच्छी इंस्टीट्यूट मिल जाएगी। एक बार आप क्लस्टर में घुस गए ना, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपका रैंक कहाँ तक चला जाएगा। तो ये चीज, एक ही क्वेश्चन पे लगभग 100 पीपल होने वाले हैं, ये हाँ मान के हाँ चलिए। हाँ हाँ 100 डेफिनेटली। के पीछे मतलब आपने 3 क्वेश्चन गलत किए, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। बाहर।
अच्छी इंस्टीट्यूट फिर से आपको नहीं मिलेगी, नहीं लेकिन मिलेगी। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज। सबकी बात, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनका एक 50 के रैंक में आता है, अगर उन्हें 3 क्वेश्चन गलत है तो वो बाहर हो जाते हैं। तुम्हारी हाँ। बात नहीं है शैलेश, तुम तो टॉप हो। अच्छा नहीं शैलेश। सर, अरे सर सिली मिस्टेक तो सबसे होती है, ऐसा कोई कोई आदमी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, सबसे मिस्टेक होती है। अपने को ध्यान बस यही रखना है कि हम कम से कम मिस्टेक करें, सही है ना। बात। कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है, सबके साथ मिस्टेक होती है। तो अपने को बस वही ध्यान रखना है कि कैसे भी करके हमारी जो एरर है उसको हम चाहे जितना भी करके कम करें उसको, ताकि हम दूसरों से आगा ज्यादा परफॉर्म कर सके। और अपने आप से भी कंपटीशन कर सकते हो आप, पिछली मॉक से ज्यादा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो धीरे धीरे करके एंड में आप कंपैरिजन में दूसरों से आगे हो ही जाओगे। जब अपना ही आप इवेल्युएट करके अपना अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो तो अल्टीमेटली आप आगे हो ही जाओगे। तो ये चीज सही है। इम्पोर्टेंट। अच्छा एक लास्ट फ्यू क्वेश्चन, डीनेक्स ने कैसे हेल्प किया? अरे सर डीनेक्स ने पता नहीं मुझे, मैं जब सब्सक्रिप्शन लिया था तो मेरे पास तो वो मॉक टेस्ट वाला सब्सक्रिप्शन था, तो पता नहीं एंड में मेरा वो जो सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक वाइज टेस्ट था वो फ्री हो गया था। पता नहीं कैसे भी करके फ्री हो गया नहीं था। तो किया। मैंने पिछले आपने किया था हम्म, फ्री, हम्म, सबके लिए फ्री कर दिया था। तो मैंने वो सब दे दिया था, यूरोलॉजी का जो थी ना वो सब टेस्ट दिया था मैंने पिछले हम्म, 3-4 दिन में। तो पिछले 3-4 दिन में 10-15 दिन में ऐसा लगता है ना कि आप मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि क्या पढ़े अब, क्योंकि पता नहीं चलता है ना कहाँ से क्वेश्चन कौन सा टॉपिक पढ़े, ऐसा होता है। तो वो टाइम पे क्वेश्चन ही करता था मैं। तो मैंने वो पूरा क्वेश्चन जो था वो सोल्व किया था। और अच्छे क्वेश्चन थे आपके, यूरोलॉजी के बहुत अच्छे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जो मतलब नीट में आ सकते थे, ऐसे क्वेश्चन थे आपके। तो अच्छे थे मतलब है। और उसमें से अगर मेरे को आते थे बहुत, 60 में से मतलब 3-4 ही गलत होते, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा काफी अच्छा होता था। कॉन्स्टेंटली काफी अच्छा स्कोर कर रहे थे, देन आई गिव यू दिस काइंड ऑफ थिंग। सो आई ओके। हैव मेनी स्टूडेंट कि हम लोगों ने एक बना के रखा था, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हेल्प करना चाहिए। व्हाट हाँ। अबाउट द डेली डोज ऑफ एमसीक्यू? अरे सर वो तो, वो एक्चुअली हम लोग 3-4 लोग थे वो साथ में पढ़ते थे, तो हम ऐसे ही पढ़ते थे 1-2 घंटे। और व्हाट्सएप में वो जो आपका मतलब ऐसे ही आपका जब मैसेज आता था ना तो उसको हम डाउनलोड कर लेते थे, पढ़ते नहीं थे उस टाइम पे, पहले डाउनलोड कर देते थे। फिर आपको सोते के टाइम पे मतलब जब सोने का टाइम होता है तब देख लेते थे पूरे दिन में क्या डिस्कशन हुआ क्या हुआ। तो उस हिसाब से रिवाइज भी हो जाता था, अच्छे पॉइंट जो है वो कवर भी हो जाते थे। और अगर 2-3-4 लोग पढ़ते थे, अगर बोर हो गए पढ़ने में, तो फिर पूरा वो जो आपके जो स्क्रीनशॉट होते थे, बेली के स्क्रीनशॉट होते थे, जो इमेज होती थी उसको सबको देख लेते थे। पता नहीं एक इमेज तो ऐसी थी जो मेरे को पता नहीं कुछ कैथेटर जैसा था, हमको पता ही नहीं चल रहा था वो क्या कैथेटर है। फिर वो सेबिस्टन का फोटो था, उसको उठा के देखा तो कार्डियोप्लेजिक कैथेटर था। उस टाइम लगा वो कार्डियोप्लेजिक कैथेटर, हमको लगा ये आईजेवी भी नहीं लग रही है, कौन सा फीमोरल लाइन भी नहीं लग रही है, पीआईसीसी भी नहीं लग रही है, क्या कैसे। फिर वो उसको सेबिस्टन में से उठा के देखा तो पता चला कि ये कार्डियोप्लेजिक कैथेटर है। अब ये सब बाउंसर क्वेश्चन है, अगर आपने ये सब चीजें है ना, आप जब पढ़ते हो तो इग्नोर हो जाती है सब चीजें, लेकिन आप क्वेश्चन में अगर जब हिट करती है तो आप उसको देखते हो ये क्या चीज है, फिर उसको आप जब किताब में देखते हो कि हाँ ये तो कार्डियोप्लेजिक कैथेटर है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट होती है, वो फिर निकलती नहीं है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेली डोज। और थोड़ा सा वही हो जाता है कि एक बार देख लिया, क्वेश्चंस देख लिए, और मंथ के एंड में फिर से रिवाइज होगा। और रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, आपको बार बार करते ही रहना है, बार बार हैमरिंग करते ही रहना है। वो चीज अगर आप मतलब 1 महीना ब्रेक लोगे, मतलब 1 महीने तक नहीं पढ़ोगे तो आप सब भूल जाओगे, क्योंकि थियरी का कॉन्सेप्ट समझना और एमसीक्यू के लिए याद रखना वो डिफरेंट चीज है। तो ये आपको बार इसीलिए हम लोगों ने चालू भी किया था कि लोग एक सबकॉन्शियस माइंड में सोते वक्त कभी भी यस यस। दिन में 10 मिनट निकाल के कर सकते। मैं हमेशा लोगों को पिन भी करता था कि दो ये वाला टेस्ट दो, और ये फ्री हाँ। था तो सब लोग देते थे, तो एक रैंक भी मान यू आर, तुम हमेशा उसमें टॉप में थे। आप 2-3 लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छा करते थे। यस इवन सर। नितिन अभी हमारे साथ है, उन्होंने तो उसी से एक मोटिवेट हुए कि और पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए, तो एक चीजें निकल के आती है कि ये नहीं बन रहा है। जैसे आपने कैथेटर का बताया, विनय ने हाँ। बहुत अच्छा है वैसे मैनेज किया, जनरल सर्जरी पार्ट ही डिड वेल। सुगम हाँ। वाज द फैकल्टी फॉर दिस डेली डोज ऑफ एमसीक्यू, ही वाज मेकिंग फ्यू मिस्टेक्स, हुआ उसमें भी, ऐसा नहीं हुआ, बट हम्म। वी ट्राई टू मिनिमाइज एवरी टाइम। So, हम्म। Shailesh, very, very congratulations for your future endeavors and of this all success you will have. I will take Faheem now. He is waiting for time. I will take you, and don't go. I will take you हाँ हाँ again. ओके। Yeah. Faheem, how are you? I'm good, sir. Thank you. How are you feeling now? Congratulations for big I'm grand success, man. feeling great. 16th rank is Thank you. truly amazing. It's almost as a Thank you, sir. topper. Thank you. Thank you, sir. So, Fahim, how you started this preparation? How you choose the urology? Sir, I am basically from Kashmir. Yes. So I have done my MBBS and MS from here only. Hmm. After Which that, I college? start. Yes, sir. Which college? From Sikkim. Hmm.
It's a postgraduate institute here. Yes. Yeah. I've done MS from there only. Okay. So after that, I started doing the senior residency Mm. in that hospital only for 2 years. Mm. And then I started studying urology in January 2021. I've actually left the senior residency after 2 years. Then I was selected as a medical officer. Okay. But within 7 days, I resigned from that, and I switched off my phone and started studying. So from that day, the journey started, and so it this was is a a long. this is a big thing, that sacrifice that you did sacrifice. That's why you are here. Otherwise, you can join the medical officer. Yes, sir, yes, sir. You Without sacrifice, it never comes easy for you. It always comes at some cost. And this year, the thing was that it was a very long journey, very long and difficult journey, and in between the exam delays and pattern changes, and it was very disappointing at times. But you have got to keep the nerve, and ultimately you have to keep it focused. It must be the very difficult for you that you quit the job. You are the two-year residency. The exam is postponing. Yeah, in between, whenever the exams get postponed, I was feeling so much frustrated, and I even applied at some places. That I am staying at home from last 5 months or 6 months. Now I'm going to work. But then again, my family was very supportive, and they always told me, no, you carry on, you can do it. So this is very important. That good friend that Shailesh has already mentioned, and you have support with the family. So everything will get together, and then the success will come. Yeah. So how you can you are keeping yourself motivated for this 6 months or 8 months when exam is postponing, patterns are changing. Then how you manage this part? So you may get disappointed at times. You may feel very fatigued at times, but you have to keep in mind always that computer screen when you'll be writing the examination, and the questions will be in front of you or the result. So you have to keep that thing, the end point in your mind, rather than feeling very dissatisfied and fatigued between the journey. So that should be your focus, should be on the end result, not what you are feeling right now. So how you started your study? So you quit the job, then it's for you choose the urology. So you are reading Campbell and general surgery both, or you just reading the general surgery as a MCQ? What was your strategy? How you make this key? My strategy was I was studying general surgery for 1 or 2 days. Then for 3 or 4, 2 or 3 days, I was studying urology. In a week? Yeah. 2 days general surgery, or some time 3 days general surgery, and then 3 days urology. So आपने 50-50 divide किया दोनों का time basically. Yeah. Sometimes I thought that I will go for general surgery in a day, like till 1 p.m., 2 p.m. Then I will start urology, but I did not find that comfortable with me. So you read whole Campbell, or you read the review or some MCQ or some theory? No, sir, I have read a review. I did like 8 or 9 revisions of Campbell review. Yeah. Plus, I read Campbell textbook, the key points only, and some important diagrams and flowcharts. So basically, you read my basic book was a Campbell review. So you basically in the Campbell text you read the bold lines. The bold lines and some important diagrams and flowcharts are very important, and some very important topics like trauma or prostate malignancy or bladder cancer. Some very important topics I read from Campbell. So you are studying alone, or you have some group? No, I was sitting at home, sir. So sitting at home. So this is very. I was alone. I was alone at home, and my family was very supportive. So how you avoid the social media? Social media, sir. When I started studying, I resigned from medical officer post. Then I switched off my phone for almost 4 months. 4 months? Yeah. Then I called my friends after 4 months, and they were like, "Where were you for 4 months?" And that was. So it's very important that you truly in this era you are leaving your phone, you are keeping yourself in one room, and it's very, very important. But slowly, yes, it's very difficult in this era. Truly, very difficult. We are in 21st century. It is very difficult, sir.
my family is complaining I cannot leave phone for 10 minutes, and you left for 4 months. That's a sacrifice. It is very difficult, sir. But in this era, you have to realize that the competition is growing. Competition is day by day growing, and to do more than the other people, you have to give up something. You have to sacrifice. So from crux of your journey is a focus. You are focused on the super specialty exam, and you crack this basically. This is very important. You have to keep focused and determined, focus, and you have to believe in yourself. It's not easy. It's not difficult as well. Yes, correct. So what you were thinking on the day of exam, or how you prepared last 10 days? So I had prepared very precise notes for urology and general surgery. Very precise. They were like 50, 60 pages. And I was revising those pages only. Only 60 pages. Yeah. And I advise that also, because you cannot revise if you read, for example, you read Bailey and you read Campbell textbook or even Campbell review. But at the end, you cannot revise that in a day. Even if you have read that 10 times, but you cannot revise that. For that, you have to make what some people do. They make notes and they make like it's 300 pages, 400 pages, and at the end they cannot revise those notes, and that all goes waste. No, I think the notes should be very precise. It should be like less than 100 pages, which you can revise in the end in just 4 or 5 hours. It's very good. So making the notes also is an art. That is a very important. You should make your own notes and then revise them. Notes are very important, sir. Notes are very important. Because we are so how you make the notes is all important topics, or what the topics where you are finding difficulty. No, sir. I think all important. I included all important topics from Campbell, especially Campbell textbook, the flow charts and key points, and some bold lines in Campbell textbook. So I prepared notes from that only. So how you manage general surgery part? General surgery, sir, I read Bailey, especially the general part, the first 5 or 6 chapters. I did not go much into abdomen or urology. I was reading already. So I focused on the first general chapters, trauma, operative care, and endocrinology, and CVTS part I read from Bailey, plus MCQs. Basically, you went for the subspecialty from the Bailey. What about the Sebastian? Sebastian, I did not read much. Did not read much. So Bailey is the best book for you for general. Bailey was I revised Bailey almost that also almost 10 or 11 times. So that's very good. So for newcomers who are going for this exam again in 20. Yeah, now as Dr. Shailesh said, now the pattern has changed, and I think now the basic books should be Bailey and Sebastian. You cannot miss any of the books, and especially they may ask any question from any specialty, and they as we have seen in this year also, they take question from any corner. It may be pediatric surgery or CVTS. They just take like there was some question in sternal torticollis from pediatric surgery. So one may just skip that question. That is just not important, but they may ask from any corner of the book any question, and you don't have to skip anything. So that we are discussing with Shailesh, that he is saying that mock tests are very important for this. What do you think that basics are? Yeah, what I have observed that you may read theory for even if you read even 15 times or 20 times, but again you are expected to make those silly mistakes, and how to correct those silly mistakes gets corrected by practicing MCQs. That's important. MCQs are very important. You may read theory 20 times, 30 times, 50 times, but without MCQs, there is just nothing. So for the beginners who are starting from now or they already have background, I also personally suggest they should read theory. మీరు తప్పు చేస్తున్నారని మీరే అంటే నేను చాలా బాధపడ్డాను. అమ్మ కూడా అన్నాను కూడా నేను ఇప్పటికీ నేను మనసులో ఉంచుకుంటాను అసలు అంతలా. Sorry for disturbance. Okay, so fine. But I also personally believe that people should have some basics, then go for MCQ. Yeah. MCQs are very important. They just polish and refine your knowledge. Correct. And the explanation of MCQ is also very important.
Yeah, experience. People read the MCQ, and when you are doing MCQ, and anyone is doing MCQ, they should read all the 4 options, and they should be able to rule out why the other 3 are not the correct answer. That is also very important. That is also So, very important. the people have to give that time for particular or each and every MCQ during the mock test or during the any test when they are giving. So, what is the how you manage the last day, that when you are giving exam? So you have some pressure that you are cut off a family, you are focused, you are 2 years or 3 years uh, uh, before you finish your MS. So that day definitely you should be in a pressure. So how you handle that pressure? Yes, sir. That day is the most important day for you because you have been preparing for that day for last 1 year, and that day is the most important day. So you have to be very positive. The thing is that you have to blame in yourself and just be calm and relax. That you can do it. You have read well, and whatever is coming in the exam, you may have read it, so you can do it. So when you gave the exam, you know that you are in the top. No, no, sir. I was not expecting such a rank. I was expecting just around below 60 or 70. I was not expecting this rank. Shailesh told me one Because thing. this year the merit got a lower bit. So Shailesh, I talked to Shailesh also in the afternoon yesterday. So he was saying that when he gave the exam, he knows that he is going to top. Like Nikhil Chopra, Neeraj Chopra, when he throw the javelin, he knows that he is the winner. So this is important. No, I was just comparing the score with the last year results. Because last year the merit was very high. Yes. 300 was getting rank 100, and Yes, this year correct. it is. It depends. That the Shailesh was talking that if something is tough, it's tough for everybody. Yeah, If it is well, competitive you are exam. in. So preparation is important, basically. So, how the family now? All are happy who supported Yeah, you? they are all are happy, and they just respect my decision that you left your senior residency. Especially my father was a bit apprehensive about my decisions. That Yes. you left the senior residency, then you left a government job, and what are you doing at home now? But now he's also satisfied. It is right. That's very important. So this is a very tough decision to leave the residency, leave the medical officer job, and coming out here. That's very good. Hats off to you. So you be here. I will take Nitin, and then we'll talk to you again. Nitin, how are you? You are unmute. You are mute, Nitin. Please unmute yourself. Hello, sir. Hello, Nitin. How are you? Are you fine? Sir, thank you. Are you fine? Yes, sir. Yes, definitely. Okay. So welcome to Nitin. Congratulations for your grand success. So we talk to the Shailesh, we talk to the Faheem. They have odd time in this preparation. So what about you, Nitin? How you started? Sir, honestly, I passed my MS in January 2021. So, January 2021. yes. So at that time, I was not in a phase to immediately prepare because I had just passed my MS. So 2-3 months, I just chit-chatted, I just roamed around. One more thing. Why in January? Usually people have exam in June. Yes, there was a 6 months lag. There was some reasons I could not give my exams, so I gave it in Jan. Okay. Yes. So this is all three have the tough time, and all are wrong. So this is very important. Failures never stop. Failure you can if आप fail होते तो आप रुकते नहीं हो. This is more important. So that's why I call you people that this is a lesson for life. It's not for single exam. Yes, sir. So you continue. So you clear your exam in January then? Then मैंने सोचा सर अभी तो एग्जाम हुआ है, अभी 2-3 महीना थोड़ा आराम करते हैं. But I knew that I wanted urology since I was in second year of my residency. I was fascinated by oncology, sir, first, but I am a very lazy fellow. So I knew that I could not stand such long surgeries which last for 4 and 6 hours. And I don't have the patience to study, just numbers and genes and mutations and trials and everything.
So and we had urology in our unit. So we did basic urological procedures. So I was like, it is nice, it is relaxing and it is soothing urology, and the patient outcomes were good. So I decided that urology is going to be my branch. So I started preparing seriously. I started preparing genuinely from July onwards, because I expected that the exam was going to be in September. So I thought that it is a hard time now that we should study. So I started in July, and for 2 months I read urology, sir, July and August. And in September, I guess we knew that the pattern is going to change. So I was not well versed with because I have read in my theory exam. So I was like कि हाँ अभी तो पढ़ा है तो हम बेली नहीं पढ़ते हैं. तो सितंबर में फिर मैंने सर बेली जनरल का पैटर्न चेंज हुआ थैंक्स टू एनबी, because my general surgery was weak, and it would have been drastic if the pattern had not been changed. And because of that, I read Bailey so thoroughly, and I have prepared notes from every chapter, because at that time I did not know that the pattern will revert again to its original one. So I prepared handmade notes from every single chapter of Bailey, so that अभी आगे चल के इतना पूरा बेली का 2 वॉल्यूम तो पढ़ के नहीं हो सकता है. So I prepared notes, and then again once again the pattern changed. And so they Then gave you 2 months. Then you read Campbell. No sir, I have never read any textbooks except from Bailey, sir. I just refer to some notes and your test series and all that. Just that's it. It helped. So, hmm? The test series helped you. Yes, sir, definitely. Nitin, That is a Nitin story to tell. Nitin is also top scorer in your test series, sir. I know that. Sir, The these guys. problem that he started from low and he came up. This is, I am seeing every student who are doing good. I am analyzing your people, what how you performing. So initially he was in last 20, 30. Then it's mid. Then he came in topper kind of thing. Yes, sir. I was not even considering myself in the race, because these guys are so deadly. This Shailesh and these fellows, they are like they shoot to kill. They are like murderers. They know everything. They know every single line from Campbell. They also know the page number, chapters, everything. And I was like, what am I doing here? So your Deanx, that daily doses and that short test which you used to keep in uh, give on Telegram, I started attempting those, and then I came to know that I am not that dumb. That's And slowly give and you the confidence basically. slowly and steadily I started gaining confidence. Then and then I came in first 10. Then I used to come in first 5 and then 3. Then it's how that happened, sir. Correct. So it's that Sugam is the faculty for this test series and the daily dose of MCQ. And Sugam, are you there? Sugam, unmute yourself. Yes, sir. Sugam made this all test series and the daily dose MCQ. He is doing his MCS from Jodhpur, and he Yes, is sir. And one more thing I'd like to mention here. yes. Yes, because I was doing my SRship as well, because I've just passed out in Jan. So I didn't used to get so much of time, free time, because and that helped the daily doses and that PDF, short PDFs. In between the time which I used to get, I used to read those. So because I could not solve 100 marks or 60 marks test in a go, because your JR3 calls you, you have to go to emergency OTs, as I was working there in my hospital. So that short test and that daily doses were very useful to me, sir. Thank you, thank you. So Sugam, credit to you. Thank you, sir.
So you started your preparation in July, so that postponing the exam is good for you basically. Yes, sir. So everything happens for good for somebody. Yes, sir. Eventually, everything fall in its place. And even after exams, I was like, I called my mom and I was like, "कि इस साल तो इस नहीं होगा," because one thing mistake I think nobody should do that. I opted two specialties. One was oncology and other was urology. So that one mistake I had made while filling the form because I was careless. So I did not know that the urology paper will come second. So when I saw oncology paper first and and the general part of oncology was horrible. So at that time only I started calculating कि अभी तो Yeah. गया. I was like अभी तो गया. So लेकिन जब यूरो का जनरल आया तब आई वाज लाइक कि ठीक है मतलब इट इज नॉट दैट बैड. We have बट two एग्जाम देने के बाद आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैव मार्क 20 आउट ऑफ 100 आई हैड मार्क 20 फॉर रिव्यू. But eventually I was like if I want to get a better score then 20 I have to attempt. Out of that I have to attempt at least 12 to 10 questions because that much of if I leave then definitely my score will go down. So I just skipped only 8 to 10 questions. I attempted almost 92 questions. That's why I think I got such a good rank because which the questions which I marked for review, almost 95% the questions they came correct afterwards. Otherwise, if I had skipped that, then I would not be sitting here right now, sir. We have two fellow. One is Faheem, who is very focused. He left everything and he is preparing. And one fellow is started in July. It casually he's started growing and top. This is very good. So this is a two-way of studying kind of thing. And then Shailesh is there, some murderer for everybody. So The we have godfather of urology. Now people will call him the godfather. a godfather. So we have Dr. Utsav Shah. He is the faculty of the Deanx. He is doing his transplant fellowship in the PGI. Shailesh, I talked about him, and he got recently in the USA conference was there. He got the best paper award there. So welcome, Utsav. How are you? Hi Vipin, hi and congratulations to all. Hello, Shailesh, sir. Thank you. Faheem and Pranjal and Nitin. Sorry, Nitin is there. Faheem and Shailesh. Thank you, sir. So I'm pursuing uro-oncology at SGPGI, and I'm so glad to see you, the young brigade of urology. Shailesh is coming to you, man. Shailesh probably belongs. Shailesh, from where did you do your MS? In VS Hospital Ahmedabad. अरे मोटा भाई हो आप दोनों एक दूसरे के. मेरा हमारा एलुमनस है वो भाई, हमने भी VS से किया है. Nice. चलो अच्छा है. I think most importantly, the purpose of this Zoom meet is to encourage the next batch who is going for the exam. And I think those who are listening, those who have logged in, should look and listen to what these people have to say, because that is where in their stories lies the so much of the description of their struggle and the ups and downs, and probably I think they will get inspiration. So because the next exam is due in 3 or 4 months, I guess. And thanks to Vipin for organizing this session. Thank you. Thank you. So it's great that you people have. It's a fun talking to you for last 1 hour. So now you people are entering into the urology, the MCH is there. Many more people who got selected with us also, or any one who got selected. My message or our message from the team is for you people now.
you are working, you will start working after a month. You will be there in the department. So now first 6 months, 7 months, you will not get much chances in the department. Whatever you will do, you have to do a ward work kind of thing. So, but in this 6 month or 8 month, you realize that what is your specialty, subspecialty kind of thing. What is your interest? Whether you are interested in uro-onco, whether you are interested in the transplant, whether you are interested in reconstruction, whether you are having interest in this endology. So there are 5-6 branches are there. You just decide next 8 months where you have to work. Then next 1 year, work particularly, read good about those topics and all, and take participation in the conferences, in the quizzes, or any kind of thing. Present paper there and make your CV strong. And one more thing, you have to publish paper also in well-renowned international journal. So by the end of the second year, you should have at least 3 to 4 paper in your name. And then in last part of your this is third year when you start, search for fellowships, where you want to go. It should not be like you finishing your MCH and thinking where I have to go, because MCH is starting your journey. This is not the end. So this is the final exam that you gave. You are entered now, but now is a long journey. It's not a 100-meter sprint. It's a long marathon. So plan according to your interest. You just see कि क्या अच्छा लगता है. You just see what you want to do to be after 10 years. So next 3 years work like this. After 10 years, where you will be there. So don't waste these 3 years. You all are going to in a very good institute. The workload will be too much, but focus on what you will be, where you will see after you another consultant after you 10 years, where you will be there. So as a basically what I say ki MCH is good, but you have to do something extra to compete in the field. This is my message, or our team message from this. I'm your senior kind of thing. This started in 2017. So this is very important. Okay. So just be. And meanwhile, counseling will be within 15 days, I think. Enjoy that time. This time will not come. You have no burden. No, everyone is happy with you. Enjoy the life. Have sleep. It's good. Thank Sir, you. I have some point. Yes. First one is आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बैठने की थोड़ी आदत डाल लीजिएगा, क्योंकि दो घंटे और 30 मिनट का पेपर रहेगा जो 150 मार्क्स का है. तो आपको आपका स्टडी का टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि आप एटलीस्ट 2 घंटे तक तो बैठ के पढ़े ही, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक एस्पिरेंट ने मेरे को मैसेज किया था ऐसा अभी पर्सनली कि सर कुछ याद नहीं रहता, क्या करें. अरे यार मैं फेल हुआ था. पूछने वाला था आपको ये कि याद कैसे रखते हो. नहीं, मैं भी फेल हुआ हूँ. मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ. मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हुई नहीं. लेकिन आप रिपीटेशन से और हार्डवर्क से कुछ भी कर सकते हैं. इसमें कुछ इतना हो नहीं. आपको बार बार पढ़ो और आपका अपना याद रखने का तरीका सब ढूंढ लो कि कैसे याद रखना है, कैसे हर तरह से मास्टर करना है. और आपको रिवीजन एक तो करना है. ठीक है, याद नहीं रहता वो सबकी कंप्लेन है ना. ऐसा नहीं कि आपको ही नहीं रहता है, सबको याद नहीं रहता है. क्योंकि एमसीक्यू को जब लाइन से उठा के पूछते हैं तो ये दिक्कत सबको रहती है, याद नहीं रहता है. वो सब कॉमन प्रॉब्लम है. लेकिन आपको बार बार रिवाइज करना है. आपका अपना तरीका ढूंढना है कि मैं कैसे इसको याद रख पाता हूँ, और अपने आप को इम्प्रूव करना है. वही चीज़ इंपॉर्टेंट है. और जो चीज़ डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं. और कंपटीशन से डरना नहीं है. डरना नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर सकते हो. जब हार्डवर्क किया है, मेहनत किया है, तो उसका तो हो सकता है आपका. उससे कुछ डरना नहीं है. अपने तरह से देखो कि कैसे मैं याद रख सकता हूँ. किसी की हेल्प लो, किसी फ्रेंड की हेल्प लो. 3-4 लोग साथ में पढ़िए, है ना. अपने जैसे लोगों को ढूंढ लीजिए, 3-4 लोग. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है पढ़ने के लिए. साथ में पढ़िए, प्रेजेंट कीजिए, डिस्कशन कीजिए. डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू रिमेम्बर, इज व्हाट आई से. तो आप डिस्कस कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा. डिस्कशन की मेमोरी बहुत लॉन्ग रहती है. तो अकेले पढ़ने से अच्छा है कि 3-4 फ्रेंड साथ में रह के पढ़िए. ठीक है, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा. और एक दूसरे के सामने टॉपिक डिस्कस कीजिए. कौन सा पॉइंट मिस हो गया है वो दूसरा वाला करेक्ट करेगा उसको. ठीक है, और डेली के 10-15 पॉइंट उसको बोल दीजिए कि तू जो टॉपिक पढ़ रहा है उसमें से 10-15 पॉइंट तू
याद रखना, 10-15 पॉइंट मैं याद रखूंगा, फिर शाम को डिस्कस करेंगे। और वो चीज़ जो है कि अगर आप पढ़ने के बाद बोर हो गए तो शाम को 8-9 बजे के बाद वो चीज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको बोर टाइम भी नहीं लगेगा और आपको मतलब आपके लिए अच्छा भी रहेगा कि डिस्कशन के साथ आपको पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। और जो चीज़ आपने डिस्कस किया हुआ है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहता है। तो ये 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। Fahim, your last message to the So my aspirant. last message is that if you want to do it, start from today. And the next thing is select your material, what you have to read till the last day. Select one book, two books. It should not be like it that you read some book for first 5 months, then forget that, then start reading another book. So you select your material wisely that I'm going to read these 2 books or 3 books, whatever it is. And in addition to that, subscribe to some MCQ series or lecture series, and just carry on that till the last day. So, Nitin, your last message. So my last message would be that rankers are not aliens. They are people who live among us. They have 2 eyes, one nose, 2 ears. They could be anyone. The person who is sitting besides you drinking tea, he could be a ranker. And when a person like me can get such a good rank, then anybody can get a rank if they want it. They should just believe in themselves, and that's it. The way is set. Eventually, everything is going to fall at its place if you work hard for it and if you believe in yourself. Thank you, sir. Sugam, your last message. Sugam, are you there or left? I think Sugam left. Okay, this is a good meeting with you. Truly, it's having fun. And one day we'll meet in some conferences. That can definitely will meet. So you are the welcome to. सर Sugam? आप एमसीए के बाद फेलोशिप करने का भी नितिन, ये सर हमको बुढ़ा करके ही छोड़ेंगे ऐसा लग रहा है। मैंने खुद ये भी किया है। बस भाई अब थक गए, अब नहीं हो रहा है हमसे। मैं बता रहा तुमको, तुम करोगे। हाँ, मैं भी नितिन जैसा ही वो एकदम लेजी पर्सन हूँ, मेरे से नहीं होता है ये सब चीजें, मतलब ऐसा देना था तो हो गया, उसके बाद अब नहीं होगा। अब खत्म करो एक गेम सब। No, sir. What happens to us medical professional guys that from the day we get selected in medical MBBS, that everybody is saying that now this is the end, this is the end. This is the end. We just carry on. Then it is PG, then it is the MC. Now you are saying that it is the start. Yes. So Yeah. just carry on. Participant want to talk to you. Anyone want to talk to him? They can unmute themselves. Kundlik, he raised the hand. Okay, so no problem. We will provide this lovely meeting I have basically. Truly lovely meeting. Sir, how many hours per day to study? Shailesh, 7 hours. At least 6 hours, not more than 7 hours. Fahim? आप 7 घंटे I से ज्यादा think पढ़ोगे वो it's कोई याद नहीं रहता 6 to 7 hours. In between, you can just skip someday. You can just move out and go watch any movie and all that. It's not like you have to study every day 6 or 7 hours. You can skip some day, or you can read only 1 or 2 hours someday. But the point is that you have to read every day. Someday you can read 2 hours, 3 hours. Someday you can read 6 hours. But the point is that you have to read every day. There should not be any day when you don't touch your book. Shailesh also said the same thing. You have to read daily. Nitin, how many hours? It's difficult for me to say that, but I think whatever you read, you just give your 100% while reading. I don't think the quantity matters that much. Whatever you read, because when I used to read, when I used to be in a good mood, I used to finish one book in a day, and when I was not in the mood, then I didn't want to study for an hour. So I don't think the quantity matters. It's the quality and the integrity with which you study. You should give your 100% while you're studying. That's what matters. And understanding the concepts is what matters. And you should be aware while preparing. You should know that what the examiner is going to ask while reading. It's not like you just keep on reading, and you should know
while reading, this is the question, this is the area from which the questions are going to all know. For example, if there is a classification and we all severe, but we know thoroughly which is, we don't know what is moderate, we are confused in that, and that is what the examiner is going to ask. So we should prepare in that kind of way, I think. So I believe in smart study. So that's my message for the future urology aspirants. Study hard as well as study smart. Thank you. One line I always say: be smart, and study from the bottom of heart. Yes, sir. And I will tell you from my side, when I was doing my MS, then there's some pattern change. Before that, it was separate exam for every state. You have to go for a particular state exam, you have to give the exam. So I was preparing for urology. As I bought the Campbell in my third year, I have to read Campbell. Initially, I took the photocopy, so I was reading, but I'm not. So it's not looking like that confident. And so I bought the Campbell. So I bought the Campbell of almost 18,000 at that time. Next day, the notification came that it will be the common pattern exam. So I thought, okay, leave it. 1 year is waste. Leave it. I will see what I will do. So in April or May, I decided no, I have to go like you. I was very below average student, lazy, not reading. So I decided no, I have to crack this exam in this attempt only. So I read. This was 35th day was remaining. So I just decided I have to go, and I start reading general surgery because it's common pattern. And 11th June was my exam date for NEET SS, and the 15th June was my exam date for MS exam. And I was there, my friend was there, Mayuresh. So I asked Mayuresh, I'm going to study for this NEET SS. He said, you have, in my college, there is a history. Every year, 4 out of 11, 4 were failed. Like in your college, Shailesh. So everyone is reading for the MS, and I decided, okay, let me fail, but I will go for this NEET SS because this is my best chance. Because come on, general surgery pattern, first time people are not aware, so this is an opportunity I cannot lose. So I just read 35 days. Almost I read 18 hours. Nothing, nowhere I went because the exam preparation they will give 1 month leave basically. So I utilized that 1 month for NEET SS. And I had not read for my MS general surgery. I topped in the practical, second highest in the this one theory, and I got 93% on that time. So it's good. So this is basically you have to decide when focus. This is very important. So thank you everyone. Thank you for Shailesh. You were saying something. सर दूसरी बार भी लटकने ही वाला था, बच गया मैं। वो तो पता नहीं वो दया आ गया वो एग्जामिनर तो पास कर दिया, वरना दूसरी बार भी तो इतने कम मार्क्स रखे थे। ठीक है, पर तो लटकने में तो बहुत वो है, हमारा एक्सपीरियंस है फेल होने में तो। ये अच्छा है ना, मतलब कितना अच्छा लगता है ना अपने से लोग सामने आते हैं, आगे आते हैं। दिस इज ट्रूली वेरी गुड. This is a story for everybody basically. Okay, we will talk to you on some other day. Good luck for your future endeavors. Do well in your all MS, MCH, FCH in life, and this is a good. So welcome to the urology. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.